The Committee on Information and Communication Technology Management of the Rajya Sabha, headed by Chairperson Tiruchi Siva, today held an extensive meeting and discussion with various state officials and departments on IT-related issues in the state. A discussion was held with the Commissioner and Secretary, Assembly Secretariat Dr. Andrew Simons, on the role of information and communication technology in the Meghalaya Assembly and to review the status of the implementation of the One Nation, One Application app in the Assembly. Discussions were also held on IT awareness in the region, connectivity of BSNL network in Meghalaya, and provisions of high-speed broadband facilities. Talking to the Meghalaya Legislative Assembly channel, Rajya Sabha MP from Kerala, John Brittas, said that this study tour was to understand the requirements of assemblies in other states in regards to IT. From the Rajya Sabha and members of the Committee on Information and Technology, this study tour is to understand the requirements of assemblies in other places where we can take the democratic process to the people. Now, in few months' time, we are going to have a new parliament. From winter session onwards, we will be shifting to the new premise. So, this information technology has a greater role to play to enhance the quality of the debates and discourses and parliamentary activities. And there is a plan to link all the assemblies in parliament so that the debates that's happening there, the legislative process, the lawmaking, everything is available to everyone in the country. So, this is practically a study to understand and also to have the ideas exchanged. So in that way, this is helpful to us, and this committee headed by the chairman Tiruchi Siva is for the first time coming to the Northeast, and it's a splendid experience to us to know what is happening in this part of the country. Meanwhile, Rajya Sabha MP from Odisha, Sujit Kumar, said that the committee's mandate was to make ICT amenities available to legislative assemblies and to leverage the power of IT for better functioning of the assemblies and the parliament. He also said that the NEVA, which is a platform that will link all the state assemblies and legislative councils and the parliament, is a path-breaking and forward-looking idea. Kumar added that the committee also interacted with BSNL officials to understand what their concerns are and how the committee could prevail on the government to take up their concerns. We are part of the Information and Communication Technology Committee of the Rajya Sabha, whose mandate is to make ICT amenities available to the members and to leverage the power of IT for better functioning of the members and the parliament. And now he was talking about the platform which will link all the state assemblies and legislative councils and the parliament. The platform is called NEVA. It's a wonderful concept. It's a really path-breaking and forward-looking idea, which will link all the legislatures. So the best practices can be shared. If tomorrow I want to access a debate about any topic in the Kerala Assembly, then through this NEVA platform I will be able to do that. So the purpose of the visit, one of the objectives of the visit was to witness the implementation of this NEVA platform in the northeastern states of Manipur, Assam and now Meghalaya. Now specifically coming to BSNL, BSNL is the flagship telecom service provider in this country, but of late it has not been doing well because of competition from the private players. But it's a PSU, and we also interacted with BSNL officials in all the three places to understand what their concerns are. How could this committee prevail upon the government to take their concerns to the government and see if we can support them. We want BSNL to not only survive but also to thrive, because BSNL not only has commercial objectives, it also has service motives, unlike other private players, right? So we want BSNL to thrive and compete with the likes of Jio and Airtel. So I was told that BSNL has 13% of the market share in Meghalaya, which is a small number, but nevertheless modest, but okay. So we have interacted with the officials, we have heard their concerns, and we have asked them to give it to us in writing within 7 days. What we could do to help them, and what could the Parliament or the Government of India as a whole can help them with. Meanwhile, Dr. M.M. Tripathi, Joint Director of National Institute of Electronics and Information Technology, informed of various projects for the Northeast. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइलेट, जो कि भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है,
उसके बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर पूरे नॉर्थ ईस्ट में हैं, जिनकी कुल संख्या 21 है। और हर स्टेट में नाइलेट का कोई न कोई सेंटर या एक्सटेंशन सेंटर है, जो कि बच्चों को बहुत ही हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की ट्रेनिंग दे रहा है। अभी जो है नॉर्थ ईस्ट के लिए एक नया प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने अप्रूव किया है 92 करोड़ रुपए का, जिसमें कि 1.7 लाख बच्चों की 1,70,000 बच्चों की ट्रेनिंग होनी है। उन बच्चों के साथ साथ उसमें सीनियर सिटीजन्स भी इंक्लूडेड हैं और समाज के ऐसे तबकों के लोग जो पिछड़े हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग की व्यवस्था उसमें की गई है। मेघालय में हमारा सेंटर एक शिलोंग में है और एक तुरा में है। तो इस तरीके से हम लोग पूरे मेघालय की दोनों तरफ से कवर कर रहे हैं, जहाँ पे इन ट्रेनिंग को दी जा सकती है। इसके अलावा फ्यूचर में और भी एक्सटेंशन सेंटर की अगर आवश्यकता पड़ी तो खोलेंगे और ये हमारी कोशिश होगी कि सभी तक नाइलेट की जो क्वालिटी ट्रेनिंग है इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी वो पहुँचे। NECV2 प्रोजेक्ट में एक बहुत अच्छा हम एक मोबाइल लैब बना रहे हैं, जो कि लैब ऑन व्हील्स है, जो कि जगह जगह जाएगी, ऐसी जगहों पे जहाँ पे और कोई सुविधा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी में ट्रेनिंग की, वहाँ वो कंप्यूटर लेके जाएंगे और लोगों को ट्रेनिंग करेंगे। तो इस तरीके से भारत सरकार का ये प्रयास है कि नाइलेट के द्वारा पूरे ही नॉर्थ ईस्ट में और मेघालय में जो भी यूथ है उसको आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एमर्जिंग एरियाज़ में ट्रेनिंग दी जाए, उनके स्किल डेवलप की जाए, जिससे कि वो सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें। सर, ये MPs आए हुए हैं, उनसे आपकी बात हुई, आपने एक प्रेजेंटेशन दिया था, उसके बारे में कुछ कितना शेयर कर सकते हो, वो उतना बता देंगे सर थोड़ा सा? जी, हमने उनको ये बताया कि नाइलेट पूरे पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है, किस तरह से वो ट्रेनिंग कर रही है, स्किल डेवलपमेंट कर रही है, किस तरह से रोज़गार के निर्माण में अपना योगदान कर रही है और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर को पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हम बढ़ावा दे रहे हैं। और उनका क्या रिएक्शन था, उनका क्या फीडबैक रहा सर? उनका फीडबैक अच्छा रहा। नाइलेट की काम की उन्होंने प्रशंसा की है और उन्होंने ये भी उम्मीद की है कि हम थोड़ा सा इन स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट पे और ध्यान दें।